अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं और मैं आज आपको दिखाता हूं कि अमेरिका के अंदर क़ुरबानी के जानवर जो हैं वो कैसे ख़रीदे जाते हैं और कहां पे होते हैं। तो ये पूरा व्लॉग इस व्लॉग के अंदर जो है इस व्लॉग के अंदर मैं आपको पूरा दिखाऊँगा कि अमेरिका में क़ुरबानी कैसे की जाती है। अभी मैं इस टाइम आया हूँ हमज़ा फार्म के अंदर, तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलें फिर। अच्छा, तो अब हम हमज़ा फार्म आ गए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बकरे भी हैं और शीप भी हैं। ये सब कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे भी हैं और ये इस साइड पे भी रखे हुए हैं। प्रॉपर गर्मी ज़्यादा है जिसकी वजह से फ़ैन का भी यहाँ पे हवा का भी निज़ाम किया हुआ इन्होंने, ताकि जो है एनिमल्स हैं, इनको गोट हैं, इनको गर्मी नहीं लगे। ये एक बिल्ली जो है मज़े से सो रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Monawar Aziz. मोनोर अजीज़, वेयर यू फ्रॉम? I'm from Bangladesh. बांग्लादेश। ओके, सो हम आपका विज़िट करना चाहते हैं आपके फार्म का, और क्या प्राइसेस हैं और क्या प्रोसेस होता है ईद के हवाले से, कुर्बानी के जानवर के हवाले से, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी। We have lots of goat and lamb both. The price we started from 350 and up. 350 and up. The Okay. biggest one we have like 650. 650. And those are over 60-65 pounds meat. Oh, okay. And you can do Qurbani first day, second day, third day, any days you want it. The best thing, you can come, choose your animal, we put the tag on it, you make a full payment, then you come back with your receipt. The day you want to sacrifice, we bring the animal in front of you, then we slaughter for you, or you can slaughter for yourself. Okay. Then give us like 1 to 2 hours. We'll cut all the meat by medium size. Okay. The first and 2 days medium size. Third day we can cut it small and special, no problem. Oh, okay. So this is all your goats, right? And we have a goat here. We have a goat and lamb here. We have another 500 to 600 goat and lamb we have back there, and more another 500-600 is coming. Oh, so we okay. have over 1500 heads. ओके, सो ये सबसे बिजी टाइम होता होगा इस टाइम पे, अलॉट ऑफ कस्टमर होते हैं और कुर्बानी के लिए, जैसे कि आपने कहा कि आते हैं, वो अपनी फुल पेमेंट करके और अपना जो है जानवर जो है वो बुक कर लेते हैं जो उनको पसंद होता है। Right. You can see over here. The goats over here. Oh, they already booked. Yes. They already booked and made the payment, and they have a tag number. Oh, They have a tag number. okay. Yeah, I can see. This goat, his meat will be between 65 to 70 pounds, and I sold it for $600. Oh, the each. Yes, Okay. meat I'm talking about. Okay. Then we have a 350, 400, depending what you want, you know? Okay. So you have a cow also, right? Yes, we have a cow. You have a cow, you can buy the whole cow, or you can buy cow share. Okay. Cow So share, you can like pay a 7 people like 7. share together like this? Yeah, you can find your own people, 7 people, or if you need a 1 share, 2 share, I can help you to set up with another cow. And it costs you $275. And each day they will come and pick up the meat and they will bring to home. First day, second day, and third day. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और अलाउ नहीं है ना अमेरिका के अंदर, कि आप गाय को घर ले जाएं और वहाँ ज़िबा करें, वो वैसा यहाँ पे कोई अलाउ नहीं। जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है, काव मंडी से आपने गाय लिया और उसको घर ले जाके बांधा 3 दिन 4 दिन, वैसा यहाँ पे। Yes. You can do it too. You can take the goat from us, take it home, feed it, and can you bring it back? We can do it for you. Oh, okay, In that case, we're not responsible if the animal dies. We not replace it. Okay. But if animal dies here, we replace it.
Oh, okay, okay. Just like this year, every year we lose some animal, we call the customer replace it. Okay. अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे दूसरी जगह में, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि कितने इनके पास गोट रखी हुई है वहाँ पे। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं और गोट यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने। I have a mix now, sold and unsold. The sold one you have a tag. Oh, the sold one they have a tag on the ear, right? Yeah. And before Eid we're going to separate it. And I have all the goats. All this here. So when the customer book the animal and he will come on Eid, so how you tell what time he will get the meat? It's a first come first service. You have a line. As soon as you stay on the line, after slaughter you get the meat between 1 to 2 hours maximum. 1 to 2 hours. Yes. Okay. All right. And you will see same number on the tag. So how long you here, like Over here like 20 years. 20 years? 20 years. Same place? Same place. All right. Yeah. नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे जानवर हैं। पूरा वहाँ पे पीछे तक इन्होंने जो है ना गोट रखे हुए हैं और काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे। ये यहाँ पे ये घोड़ा भी रखा हुआ है इन्होंने। क्या चिकन कहाँ है? वाह, Oh, it's the cat. यस, काऊ है ये। ये इनका क्या प्राइस होता है? वेट के हिसाब से होता है या? We have a weight and the size also. Like the big one, average we have like $2,200-$2,300 is average. $2,200-$2,300. Right. The biggest one I have at $3,800. $3,800. Yeah, very big. What is the price of this black one? Black one I believe is 24. 2,400? Yeah. Okay, so everything included? Cutting, everything. Everything, cutting and ready to meet, right? Yes, ready to give it to you. तो जब आप जानवर को काटते हैं उसका प्रॉपर मीट जो है बैग में डाल के इस तरह करके देते हैं आप, बिल्कुल रेडी करके? We cut medium size. And we make a 7 share, 5 share, whatever you want. Oh, okay. It's depend on the how they want the customer. The customer wants it. Some customer they want like a 4 share, 7 share, 8 share, 7 share, 5 share. It's too big. But you put in the bag and properly. Yeah, we put a big bag. Okay. Big bag. ये देख सकते हैं कितना बड़ा भेल है यहाँ पे। Yes. This one, this look like Australian. The 258, right? इसका कुहान नहीं है तो ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है। या तो भाई अभी हम अंदर नहीं जा रहे, अंदर जाए तो ये मारे हमें तो हमारा काम यहीं पे तमाम हो जाए, तो इसलिए हम बाहर से ही देखते हैं। जनता अब नीचे उतरो, पीछे जाओ, काव का आएगी। ये जो है यहाँ पे सबसे बड़ा है 95 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला। Okay, what is the price with that one, 25 number? That's 3,800. 3,800. And how much pound weight? That's a 1,925 pounds, close to 2,000. 2,000 almost. Yeah, almost 2,000 pounds. So when you cut the cow, so you will give the
paya and liver, everything you give to customer, or And not an Eid day. Eid day, first 2 days, we don't give no head, no feet. no head, no We give feet, meat and liver. meat and liver? Liver. If you want it, you can take the head, feet out. You can bring it back after Qurbani. I can process it free for you, but not the first and second. Oh, because Yeah, this is if a you very do- busy if day, busy that's day, why. then it take time. Yeah, it But will if take you time. do third day, I can do it for you. All right. Okay. Thank you. What is the price like this one? Like, this is 2600. This is 2600, and this one? This one, Yeah, black one. the black one we sell, I think, is 1800. 1800. Yes. Okay. This one is 2400. 2400. And how much pound? This is only going close to 1200 pounds. 1200 pound. Yeah, this depends on the quality of the cow. This is all Australian, right? No. No Australian? All mixed. No. That's a Brahma. Brown. That's a Longhorn. Mm-hmm. A Beef Master. Mm-hmm. Then we have a more Brahma. We have a Angus. That's a Longhorn. We have a Black Angus. Okay, where you buy this one? Like you This is for local auctions. local auction in Yeah, Texas in or out Texas. of Texas? In all Texas. In Texas. All in Texas. All in Texas. And how you transport here? We have a buyer. They buy it, and we pay for them transportation, and they bring it here. Oh, okay. And how many days it will take? Like one day and Oh, no. It's like 4 hours, 5 hours. 4 hours, 5 Yeah, hours. yeah. Okay. Okay. So one more question. Like, what is the timing in Hamza Farm? The business hours? Yeah, business hours. Okay, sure. Ready? Yeah. Our regular business hours are 8 to 5:30 every day, Monday to Sunday. Every day we open 7 days a week. We never close. Okay. We don't have no holiday. Oh, no holidays. And You for working Ramadan- all days, like 7 days, or you have some? No, I'm off 2 days. I Oh. work 5 days. Oh, okay. I took to the, But the farm is Sunday, 7 days a 7 week. days yeah, 7 days a week. And the holiday Qurbani time, we open 7:30. We don't close until we finish. Oh, like 7, 8, whatever And time. whenever the last customer finish. Oh, okay. Yeah. अच्छा, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे मीट कट कैसे होता है अंदर, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, कैसे मीट कट किया जाता है, और अंदर का आपको विज़िट करवाते हैं। This is like a killing floor for the goat. ऑलराइट। This one go is set up, so we start over here. In Islamic way. ओके। And this is the place we cut the meat. This is our meat cutter place. We cut the meat here. All the animal is killed by manually, by hand cut. Goat and cow. We don't use no stanga, no gun. All we use a knife. ओके, रेडी। So Qurbani donation meat, we have organization they accept the meat for poor people, for refugees like Burmese, Rohingya, Afghanistan, Somalia, any other refugee they distribute it. And a lot of people they donate the meat. Every year is going up and up. यहाँ पे डील चल रही है। No, just let me. जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे हमज़ा फार्म के अंदर मैं आया हूँ, और यहाँ पे कुर्बानी के लिए जो बकरे हैं और गाय हैं, लैम हैं, सब मैंने आपको दिखाया और उनकी प्राइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी मैंने। और ये जो हमज़ा फार्म है थोड़ा जो है सिटी से हट के है, तो एरिया भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे घर भी जो है वो बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत और खुले खुले घर है यहाँ पे। ये आप पीछे का व्यू देख सकते हैं मेरे हमज़ा फार्म का। अगर आपका भी कुर्बानी करने का इरादा है तो आप यहाँ पे आएँ, हमज़ा फार्म के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर है। एड्रेस में नीचे जो है वो मेंशन कर दूँगा। इसके अलावा अगर आप गूगल पे भी हमज़ा फार्म लिखें तो आपको पूरी लोकेशन गूगल से भी आपको मिल जाएगी।
अगर आप भी कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी आइए और अपना कुर्बानी का जानवर जो है वो पसंद कीजिए और बुक कीजिए, इससे पहले कि अच्छे जो जानवर हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आप जल्दी आएँ और यहाँ पे जो है अपना कुर्बानी का जानवर जो है वो सेलेक्ट करें, बुक करें और ईद वाले दिन आके अपना कुर्बानी जो है वो अदा करें। अच्छा, तो इस एरिया के अंदर जो है बहुत बड़ा एरिया है ये, और यहाँ पे बहुत खुले घर हैं। लोगों ने अपने जो है जानवर भी रखे हुए हैं, उनका घर है, उनके सामने जो है बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें वो अपने जो हॉर्स वगैरह हो गए, डॉग हो गया या कोई भी एनिमल हो गया वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये एरिया जो है जैसे देहात टाइप एरिया होता है वैसे एरिया है, बड़े घर हैं और जो है बहुत खुली जगह है। हर ये घर देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है।